सुप्रभातम सर्वेशाम। आप सभी को सुप्रभात। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुछ ही क्षणों में हमारे समक्ष उपस्थित होने वाले हैं। उनकी उपस्थिति के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए आप सभी सम्मानित सदस्यों, विद्यार्थियों एवं YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम के साक्षी सभी सम्मानित दर्शकों का मैं सत्यवीर गिरी हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का यह कार्यक्रम हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों की अथक मेहनत एवं लगन के प्रतिफल का कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम को देखकर आपको ज्ञात हो जाएगा कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थी न केवल शैक्षणिक एवं अकादमिक कार्यों में आगे हैं, अपितु वे नृत्य एवं संगीत के साथ साथ अन्यान्य गतिविधियों में भी किसी से पीछे नहीं हैं। ऐसे होनहार एवं देश के उज्जवल भविष्य के चमकते सितारों को आज के इस कार्यक्रम द्वारा सम्मानित करते हुए हमें गर्व एवं आनंद की अनुभूति होगी। साथियों, कुछ ही क्षणों में हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट अतिथि हमारे समक्ष उपस्थित होने वाले हैं। कृपया थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और उनकी उपस्थिति के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। Good morning, everybody. I, Sunita Mishra, with my co-host Satyavir Giri, extend a warm and cordial welcome to you all who are present here and those who are associated with us through the YouTube link. I welcome you in this pleasant spring morning to this multipurpose hall, resplendent with the presence of ingenious, trusting, and dew-eyed face of children. Annual Day is a very important day for the students. It is the day that marks the outcome of the activities of the whole year and how students are being developed and groomed all around the year. Today is the day to celebrate, to remember, acknowledge, and admire the achievements of our institution. साथियों, आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान विनीत कुमार शर्मा जी, स्थल निदेशक तारापुर महाराष्ट्र स्थल, एवं इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री सुशांत कुमार सारंगी, समन्वयक प्रधानाचार्य, यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि श्री काशीनाथ बेहरा जी, प्रधानाचार्य ACS 1, एवं श्री पी नरसिम्हन, उप प्रधानाचार्य ACS 1, एवं श्री गुणवंत खोबरागड़े, उप प्रधानाचार्य ACS 2 का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जिस प्रकार बिना फूलों के किसी उपवन की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार बिना मुख्य अतिथि के किसी भी कार्यक्रम की सुंदरता नहीं होती। यह हमारा परम सौभाग्य है कि श्रीमान विनीत कुमार शर्मा जी, स्थल निदेशक तारापुर महाराष्ट्र स्थल, ने हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य आतिथ्य स्वीकार किया, अपितु अपने व्यस्ततम समय में से बहुमूल्य समय देकर हमें कृतार्थ किया है। महोदय,
चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली, आपके आगमन से श्रीमान जी हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली, मुस्कुराहट मिली। It's a proud privilege to have as our chief guest Mr. Vineet Kumar Sharma, Site Director, Tarapur, Maharashtra Site. Now I request Amulya Nurvang to welcome our chief guest with a bouquet of flowers. We are fortunate to have Principal ACS number 1, Mr. Kasinath Behra with us. I request Amalya Nurbangs to welcome him with a bunch of flowers. It's our proud privilege to have our chief guest, Mr. Vineet Kumar Sharma, Site Director, Tarapur, Maharashtra Site, who not only works at the helm of Tarapur Atomic Power Station, but also a torchbearer for AECS schools of Tarapur. He inspires us to dream big, to act big, and believe in big. Now, I would like to request our chief guest, accompanied by other dignitaries, to light the ceremonial lamp. साथियों, हमारी भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होती है। दीप अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाता है। दीप प्रकाश के द्वारा ज्ञान का प्रतीक है। मानव जीवन का उद्देश्य भी अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करना है। अतः आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग दीप प्रज्वलन से कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशम च दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति नमोस्तुते। Let's hope that the light of education erase the differences in the world, injustice and violence, and take us on the right path. साथियों, मैं अब आपकी सभी की जोरदार तालियों के बीच हमारे विद्यालय के बहुमुखी एवं प्रतिभा के धनी उन विद्यार्थियों का स्वागत एवं बुलाना चाहूंगा जिन्होंने हमारे अतिथियों के लिए एक स्वागत गीत तैयार किया है। इस गीत को तैयार कराने में अपना अमूल्य सहयोग दिया है हमारे विद्यालय के बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री सेल्सन सैमुअल जी ने। एवं इस गीत को प्रस्तुत करने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हैं मंथन मांडगे, प्रणीत, जेम्स पी विनोद, शुभधा चौहान, ग्लोरिया राउत एवं सुशीला रानी जेकोब। आइए इस स्वागत गीत का आनंद लेते हैं।
It was a really heartwarming welcome. We are thankful to our musical group and to Selson sir. The melodious song has filled the whole atmosphere with positive energy. Before we proceed with our other programs, I would like to request the dignitaries, our chief guest and other dignitaries to occupy the seats in the sofa, and I would like to request our VP sir to accompany them to the sofa. To develop the abilities in every individual child, to attract their creativity, to foster a spirit of autonomy, and to develop a feeling of responsibility towards society has been the aim of ACS 3 Tarapur. And keeping this in our mind, we are going to present annual day celebration showcasing the talents of around 800 children of our school. Our Vice Principal in charge, Mr. S. Sesson, has been the driving force who manages, coordinates, guides, and supervises various activities of the institution. It's my honor to request our Vice Principal, Sir, Mr. S. Sesson, to present a welcome address for the Chief Guest and other dignitaries. Hello, hello. Yeah. Okay. Respected Chairman LMC and Site Director TMS, Mr. Vinit Kumar Sharma, Mr. Kashinath Bera, Principal ACS 1, Headmaster, dear colleagues, and all my lovable students, very good morning to you all. First of all, I take this opportunity to welcome our Site Director, TMS and Chairman LMC, who has always supported all the endeavors, all the requirements that are required for all the three schools and also to our school ACS 3. He is the guiding spirit behind the functioning, rather the smooth functioning of all the schools in AAC Tarapur. And definitely, sir, with your unstinted support, I am very much hopeful that I will be in a position to lead AACS 3 to a path of glory. So once again, I take this opportunity to welcome you, sir. Welcome you. I also take this opportunity to welcome the Principal ACS 1, Mr. Kashinath Bera, who has just a few months back has taken over the charge of ACS 1 Tarapur. Being the principal of ACS 1 Tarapur, one of the oldest schools in AES, is not a very small task, and he is doing the job well. Definitely. In fact, he is in a more dynamic way. He is leading his school. Once again, I take this opportunity to welcome him to this occasion, that is the annual day function of our school. I welcome you, sir.
I also take this opportunity to welcome all the members of the staff, the parents, the passed out students of class 12th and 10th who is going to receive the prizes, and also my dear wonderful children of ACS 3 to this occasion, that is the annual day function of ACS 3. Once again, I welcome you all for this annual day of the ACS 3 Tharapu. Thank you. Now, without much delay, it is a customary practice on the annual day of the function to present the annual report of the school, which will tell you what are the achievements and what are the achievements of the students, rather the students of the school throughout that year. So the last annual day function was held on January 2021. So today's annual report will start from there till yesterday, that is 28th February 2022, that is the National Science Day. So first let me talk about the first and foremost is the academics. That is, let me talk about the board exam results of class 12th. So the class 12th board exam results this year is 100% compared to last year 97.6, and the excellent index is also 100%. That is, each and every student of class 12th has scored more than 60% in the examination. It's really a wonderful achievement. Then we go for the class 10th board result. Again in class 10th, the result is 100%, and here last year also the result is 100%, but still there is an improvement. We can see the quality index also from 7.3 to 7.7 and excellent index 74.5 a great jump, 84, almost 85%. That is 85% of the students has got more than 60% marks in class 10th examination last year. Though the class 10th and 12th examination last year has not been conducted at all, but still the feat achieved is not an easy one, because all these marks that the children got is on the basis of whatever examination conducted at the school level, whether it is term test or half yearly or confidence test, etc., etc. So there is no mean achievement. Now we'll go for annual exam class 11th. So annual exam class 11th is again 100%, and the excellent index has also increased from 89.8 to 96.2, and the quality index has also risen from 7.1 to 7.9. And again, if you go for class 9th results, again this year it is 100% compared to last year 98.1, and in this case in class 9th we have to achieve a little more, because compared to last year the excellent index and quality index is a little less. So all the other 6 to 8 or 1 to 8, all of us know that there is a automatic pass and 100% result is there as per the RTE Act. Now the external examination, or now we come to the achievement of the students in the last 1 year. So after a long time we have Master Ishan Yadav, who has secured the NTSC scholarship. It is really one of the greatest achievements in qualifying NTSC in both the phases and getting the scholarship. Then admission in premier institutes. There are 3 students who have admitted in premier institutions. One of them is Master Abhinit Kumar, who joined
AIMS Nagpur after scoring a fantastic 601 marks out of 720 in NEET. And Master Anish Patil, and who is here, he has joined the College of Engineering Pune Electrical through MST CET, and Master Kshitish Dangle, who through the entrance test passed, and now he is studying in IIM Rohtak, that is Indian Institute of Management. Getting admission into Indian Institute of Management or College of Engineering Pune is definitely not an easy task. I want everybody to clap for the great achievement of these youngsters. And continuing our achievements and excellence, we will go for the next one, Institute for Promotion of Mathematics exam. Though it is a private one, the Ananya Chandrakant Chaudhary of class 6 secured 63rd merit rank in IPM, and in International Mathematics Olympiad, Ananya Sandeep Gaikwad of class 7 secured zonal rank 11th in the examination. Again, there are no mean achievement. These are no mean achievement. Next, we come to the CCA, that is the co-curricular activities. We had the inter-school debate competition, that is online. So AICS 3 always take the progressive step in doing such co-curricular activities and conducting such competitions. So it was organized in Google platform by AICS 3 Tarapur as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, and also as part of a hub activity. We have taken them and we have conducted inter-school debate competition. The debate competition was held both in English and in the local language Marathi. Our school students got the English debate. Our school students secured the 3rd position, and in the Marathi debate, our school got the consolation prize. Then there was a inter-school Hindi debate competition conducted by Viraj International School. Our school students participated, and Miss Tripti Dongar Divi of class 11th secured the 3rd position. Then, as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav, Atomic Energy Education Society, AES, conducted an inter-AES competition. That is, they wanted to prepare, all of us to prepare an audio-video competition of how much India has achieved in the last 75 years. Our school participated in that, and we are able to get the runner-up position in this competition, and this is among the all 31 schools. Our school got the 2nd position. Again, it is really a great achievement. I want everybody to clap for this. We are continuing with the glorious record of achievers. Then there is a World Wisdom Quiz. The World Wisdom Quiz, students of classes 6 to 9 participated, and Miss Janvi Malik and Master Himnish Wagmare scored the 1st and 2nd position at the school level. Then there was an International Olympiad, Drawing Olympiad, in which Miss Ruchita Wagmare, a class 10 student, participated and secured 88th rank. It is kudos to Ruchita Wagmare. Now we come to the sports department. Though due to COVID-19, the government as well as the CBSE strictly said no sports tournament of any sort should be conducted. We conducted an online push-up tournament, which is an innovative idea from our PT teachers, that PT department led by Mr. Bijumohan. That innovative idea, it struck cards in all the schools who are in the hub, and inter-school online push-up tournament was conducted, and the chief guest was Joby Michael, gold medalist in triple jump.
in National Master Meet. And our school also, some of the students of our school also participated and got and secured the trophy in this inter-school push-up tournament also. Then we come to the achievement of teachers. Mr. Bijumon, SK, TGT, PET received the AES award at the cluster level. And Mr. Selson Samuel, PGT senior scale, and Mr. Gujarati, our headmaster, received the special trophy and certificate for completing illustrious service of 25 years in AES. And Mrs. Priya Pimpalkar, PRT, received the certificate of merit for Hindi elocution competition. So we are second to none in celebrating the various festivals on various days. So even during the COVID pandemic situation, our school conducted various activities that keep the students motivated. So we started off, as I said, in January 30th with annual day celebration, in which our site director V.K. Sharma was the chief guest. It was perhaps the first time in AES that we are going in for a live come virtual, annual day celebration in 2021 January 30th. And then the National Technology Day was observed on 11th May, in which the special message was delivered by Mr. A.K. Balasubramanian, Director Technical NPCIL. Then we also celebrated Anti-Tobacco Day, that is part of ACS 3 to bring awareness to the students and also to the local people that how harmful is the use of tobacco. Then we have conducted various other days like World Environment Day, International Yoga Day, and World English Day celebration. This World English Day celebration was celebrated on 21st July, and Mr. Sam Daniel, head NDTV Bureau, was the chief guest on the occasion. He gave a lecture on that occasion, and Mr. Selson Samuel, PGT English, was the brain behind this wonderful event. And as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, the school 3 also celebrated the Independence Day as well as the Republic Day of 2021 and 22 in the patriotic fervor. Then Hindi Pakwada was also conducted from 14 to 28 September, and Teachers' Day on September 6th. Then students of class 12th joined the program virtually. Then Indian National Army Rising Day was conducted on 21st October 2021 with rich tributes to the great patriot and freedom fighter Sri Subhash Chandra Bose. And National Library Week celebration was also celebrated on the month of November. Then the National Science Day, culminating in the National Science Day, February 28, 2022. So that is just 2 days back, we had Mr. Dr. A. Baburajan, head ESL, as the chief guest for the function. The students of our school, right from 6th standard to 11th standard, participating in demonstrating various activities. And the coordinating principal ACS to Tarapur, Mr. Sarangi, also was the chief guest in distributing the prizes to the children of classes 1st to 3rd. Then apart from all these activities and days which are observed, we had also conducted various other activities like motivational, which is motivational lectures, which is a kind of motivating the students, particularly for board-going students. So motivational lecture was conducted
on April 2021 by Madam Amala Stanley, okay, who was the ex-principal Little Flower High School. And another motivational lecture was arranged, and this time it was by an ex-student, Ms. Grishma Sonwalkar, BTech Triple E, and who is presently studying in IIM Ahmedabad, the month of July. Then the National Reading Week was conducted, in which once again our chief guest was Sam Daniel, television journalist and head Chennai Bureau for NDTV. Then Vikram Sarabhai birth anniversary, a special session on basics of nuclear energy was conducted by NPCIL as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, and Madam Jarna Taneja, Deputy Chief Engineer Corporate Communication, addressed the students and made aware of the students how the nuclear energy is produced and how it is useful to, how it can be useful to mankind. And we are second to none in doing the social services also. So the AHS 3 Tarapur contributed heavily on Rashtriya Poshan Mission to reach out to the underprivileged children of Boisar Station area. Nearly about 90 packets of foods and fruits are donated by the student, teachers and parents of the school, and these were distributed nearby the slum area by the AHS 3 staff members. So, as I have said, right from January 2021 till 28 February 2022, we have conducted various events, observed various days. We have listed out all the achievement of the students as well as the achievement of the teachers. Now, before ending my speech, whatever we have achieved so far would not have been possible without the able support of our headmaster, Mr. Akhilesh Gujarati, and Mr. M.J. Iqbal, PGT Mathematics. Also take this opportunity to thank all the staff members who have wholeheartedly supported me in all my endeavors. Last but not the least, it would have been impossible to have achieved so much without the proper and able guidance of the Chairman LMC and Site Director TMS, Mr. Vineet Kumar Sharma. Thank you. Thank you, one and all. Thank you, sir, for presenting the annual report and making us aware about the achievements of AECS 3 and the brilliant performance of our students in the field of academics, not only in the field of economics, but in other extracurricular and co-curricular activities. And we have gone a long way in training our students to be socially responsible citizens who are ready to take our country ahead with great zeal. साथियों, पुरस्कार अच्छे व्यवहार एवं प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करने का एक सही तरीका है। यही कारण है कि हमारा विद्यालय प्रतिवर्ष वार्षिकोत्सव के दिन होनहार प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर गर्व महसूस करता है। पूरे साल विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले इन छात्रों को इस कार्यक्रम में पुरस्कृत कर हम गर्व का अनुभव करते हैं। यह छात्र न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, अपितु खेल, कला तथा विज्ञान आदि के क्षेत्र में भी अपना परचम लहराते हैं। ऐसे मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान विनीत कुमार शर्मा जी, स्थल निदेशक तारापुर महाराष्ट्र स्थल जी को। वे कृपया मंच पर आएं और अपने कर कमलों द्वारा इन विद्यार्थियों को सम्मानित कर जोश एवं ऊर्जा का संचार करें। A history is created in ACS number 3 because for the first time
Ehsan Yadav of ACS 3 has passed the NTSC exam with flying colors, and I'd like to request Ehsan Yadav, he's not here, parent. His father is here to receive the award from his behalf. NTSC exam or National Talent Search exam is conducted by NCERT. I'd like to just inform you here that NTSC qualified students get scholarship till they complete their education. That means till they finish their education till doctorate level. Scholarship is given to them. Next, I'd like to call upon Ananya Chandrakant Chaudhary of 6th standard, who has secured 63rd position in IPM. Ananya Gaikwad, standard 7, has secured zonal rank 11 in International Math Olympiad. आपकी तालियों में वो जोश होना चाहिए जो इनके उत्साह को बरकरार रख सके। Our students participated in India's only Our students participated in India's only international level wildlife quiz, and they have brought laurels to school. Janvi Malik stood first at school level. Himnis Wagmare secured 2nd position at school level. Ruchika Wagmare secured 88th state position in International Drawing Olympiad. Our students bring accolade to the school, not only when they are in school, but after leaving school, they also bring accolades by getting entrance to premier institutes of India. I'd like to call upon Vineet Kumar. He has Avinit Kumar, who has secured an entrance in All India Medical Institute, Nagpur. Anis Patil, who has scored 96.96 in CET in Common Entrance Test, has secured an admission in Engineering College of Pune. Sitish Dongle has got a seat in IIM Rohtak. There is a special prize for the NTSC scholars and those children who have got admission in the premier institutes. I'd like to thank our chief guest for encouraging our children. And these students, Ehsan Yadav has got a cash prize of 4,000. Avinit Kumar, Anis Patil and Satish Dongle has scored a cash prize of 800, and they are requested to collect the check from the office. साथियों, अब समय हो चला है इस सभा को ऊर्जा और जोश से भरने का। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में, जिनका आपको बेसब्री से इंतजार है। बिल्कुल, इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों को तैयार करने में हमारे इन बहुमुखी प्रतिभा के धनी विद्यार्थियों ने दिन रात एक कर दिया था। इन छोटे छोटे विद्यार्थियों ने
न केवल नृत्य इत्यादि का अभ्यास ही किया है, अपितु अकादमिक स्तर पर भी किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरती है। इसी कड़ी में आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे इन छोटे मोटे कक्षा 5वीं एवं 6वीं के विद्यार्थियों को, जिन्होंने एक समूह नृत्य का आयोजन किया है। इनके समूह नृत्य की थीम है प्रकृति एवं पर्यावरण। क्योंकि पृथ्वी ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत कृतियों में से एक है और मानव जाति का ये सौभाग्य है कि हम भी इसका एक हिस्सा हैं। हमारी धरती बहुत ही सुंदर व हरियाली से भरपूर है। प्रकृति की मनोहर छटा मन में एक नया उल्लास भरती है। हम सब प्रकृति में होने वाले निरंतर बदलाव को देखते हैं, महसूस करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। हमारी प्रकृति हमें वह सब प्रदान करती है जो हमें अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक है। अतः हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम इसके संरक्षण में अपना योगदान दें। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती कक्षा 5वीं व 6वीं के विद्यार्थियों की इस नृत्य प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। आइए इस नृत्य प्रस्तुति का आनंद लेते हैं। Earth is the only known planet having life in this universe. We should respect and maintain everything we get from our Mother Earth. ये ज़मीं ये आसमां है अपना, बरसते मेघा के बूंदे भी हैं अपने। ये हवा ये ज़मीं ये आसमां है अपना, बरसते मेघा के बूंदे भी हैं अपने। हरियाली धरती पर पन्नों का हार, गोदी में खेलते हैं नदियाँ हजार, नदियाँ हजार। गाँव प्यारे शहर सारे, गाँव प्यारे शहर सारे, पंखी और पशुदल प्रकृति के साथ रहे नरवन पशु पक्षी जल, प्रकृति के साथ रहे नरवन पशु पक्षी जल।
सृष्टि करता मानव, हरे भरे प्रकृति का नाश करता मानव, नाश करता मानव। प्रगति की चोटी पर खड़ा है ये मानव, अपने ही किए से त्रस्त है ये मानव, अपने ही किए से त्रस्त है ये मानव। अब समय आ गया है कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काटना बंद करे। यदि मनुष्य ठान ले तो वह प्रकृति को बचा सकते हैं। अपने जन्मदिन पर पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। यदि प्रकृति स्वच्छ रहेगी तभी हम स्वस्थ रहेंगे। बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा, फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। अगर सुन लो जो संभले न हम तो बम ये फट जाएगा, कि बहती सी नदिया का ये पानी रुक जाएगा, कि कर दो रहम धरती का ये दम भी घुट जाएगा, कि कुदरत की नस नस में जहर ये बस जाएगा। प्लास्टिक ये हम सब मोहताज है, कैसा ये समाज है। कल ना हो हाथों में आज है, मौका ये अब ना गवाए रे। हम है तो तुम हो तो हम, इंसान हो
चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडी गिडी गिडिगो इडी पाई चिकी चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकरक बुकु बुकु रे टुकु बुकु रे चकलक बिक्को चिक्को सिली 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 गो जगड़दुम चिकी चकचो। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और बच्चों की तालियों की गूंज यह साबित करेगी कि इन बच्चों ने कितनी मेहनत की है और इनकी मेहनत कितनी सार्थक और सफल हुई है। प्रकृति एवं पर्यावरण को संरक्षित करने की थीम को लेकर एवं स्वच्छ भारत हरित भारत की थीम को लेकर प्रस्तुत किए गए इस नृत्य को निर्देशन किया था श्रीमती आभा यादव एवं श्रीमती कनकवल्ली जयराम ने, एवं इसमें अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी थी ग्लोरिया राउत, काव्या साली, लाइबा शेख, आद्या राहुल, तुषारिका सिंह, अनीस बामने, सुकृति रानी, धृति जयराम, अद्विता यादव, छवि यशवर्धन, आर्यन चित्ते, युक्ति मुनानकर, अपेक्षा बघेल, सिद्धि ढेमरे, भाविका रेगार, प्रार्थना स्वयं, श्री मिश्रा, अनन्या चौधरी एवं मंथन मांडगे ने। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। What a energetic, melodious, expressive performance, and a performance which gives apt message for today's world, in which we develop, but we should not keep our eyes away from a sustainable future. Garba dance is quite popular among the youth for its colorful dresses, glittering costumes, and highly energetic, concentric movements. Please welcome on stage Urvi Gawade, Radhika Gupta, Mrinal Sindhe, Srishti Tamankar, Aditi Pandharkar, Sonakshi Chove, Bhagyananda Keni, Unnati Gharat, Navapallava, Subija for a melodious performance of Garba dance. This dance is directed by Pratibha Rokde Madam and Swati Madam.
संग ढोल बाजे, ढोल बाजे, हाय हाय धम धम हाय, नगाड़े संग ढोल बाजे, ढोल बाजे, हाय 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 धम हाय। पल पल रे पल पल बीता जल जल नाच, अब चल आजा रे थर 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 थर, हाँ कांपे थर थर, हाँ डर डर जी से डर अब ना बागों में बोला बोला रे बोला मोर बदला रे दिल का भूगोल, नगाड़े संग ढोल बाजे, ढोल बाजे, हाय हाय धम धम हाय, नगाड़े संग ढोल बाजे, ढोल बाजे, हाय 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 धम हाय। हे धिकड़ाक आजा उड़ के सराट, पैरों से बीड़ी जरा खोल, नगाड़े संग ढोल बाजे, ढोल बाजे, हाय हाय धम धम हाय, नगाड़े संग ढोल बाजे, ढोल बाजे, हाय 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 धम हाय, नगाड़े संग ढोल बाजे, ढोल बाजे, हाय हाय धम धम हाय, नगाड़े संग ढोल बाजे, ढोल बाजे, हाय 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 धम Wow, incredible. That was really a lovely performance and lovely rhythmic movement of feet and hands to the beat of Nagada. How captivating. Let's move forward to the next item. Music entertains. Music takes us to heaven, away from the worries and pains of the reality, harsh reality. Our nightingales are coming to stage with a beautiful melodious song. They are guided by Salu Chaudhary madam, and the singers are Shreya Khobragade, Sachi S. Vardhan, Lakshmi Kashyap, Bhumi Gosavi, Swara Mahangde, Swara Tiblekar, Bhumi Thakur. Please welcome them, children, with a round of applause. संस्कृत में एक कहावत है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशुपुक्ष विषाणहीन। बिना संगीत और साहित्य के मनुष्य उसी प्रकार शोभा नहीं देता है जिस प्रकार एक पशु बिना सींग और पूंछ की शोभा नहीं देता। मनुष्य के जीवन में संगीत परम आवश्यक है,
और हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों में यह कला उत्कृष्ट कोटि की है। तो आइए आनंद लेते हैं आज के इस संगीत गायन के कार्यक्रम की। शबनम हम हैं और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो, उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। साथियों, जैसे एक जादूगर की पिटारी में कई सारे अनोखे कार्यक्रम रहते हैं, कई सारी अद्भुत चमत्कृतियां रहती हैं, उसी प्रकार हमारे पिटारे में भी बहुत सारा खजाना भरा पड़ा है। किंतु यह समय अभी कुछ और आपके सामने आकर्षक बनाने का है। इसी कड़ी में मैं आगे चलते हुए हमारे ACS 1 के प्रिंसिपल श्री काशीनाथ बेहरा जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वे मंच पर आएं और हमारे कुछ अन्य विद्यार्थियों को पुरस्कृत करें। श्री काशीनाथ बेहरा जी, प्रधानाचार्य ACS 1। सर्वप्रथम मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा सहाना पलैयप्पन जी को, जिन्होंने अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया था। अभी वे उपस्थित नहीं है। आगे मैं उपस्थित बुलाना चाहूंगा अतुल्य अनिल कुमार जी को। वे कृपया मंच पर आएं और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। साथियों, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूंगा अदिति जोड़गे, जिन्होंने अंतर विद्यालयी वाद विवाद प्रतियोगिता में मराठी विषय के साथ कंसोलेशन प्राइज प्राप्त किया है। इसी के साथ मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा अनुश्री साने। इन्होंने भी अंतर विद्यालयी वाद विवाद प्रतियोगिता में कंसोलेशन प्राइज प्राप्त किया है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। अगली कड़ी में मैं आह्वान करना चाहूंगा मिस तृप्ति डोंगर देवे का,
जिन्होंने अंतर विद्यालयी वाद विवाद प्रतियोगिता हिंदी विषय में तृतीय स्थान प्राप्त किया था। महोदय, मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा, यह वह छात्रा हैं जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर कई सारे प्रदेश के विद्यालयों द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया था, प्रतिभाग किया था, किंतु तृप्ति डोंगर देवी ने केवल 2 दिन की तैयारी में ही इस मुकाम को हासिल किया है। हमारे विद्यालय ने इस कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्य को लेकर के पुशअप चैलेंज का आयोजन किया था। इस कड़ी में मैं पुशअप चैलेंज की बालिका वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली स्वरा महांगदे को आह्वान करूंगा। स्वरा महांगदे इस समय उपस्थित नहीं है। स्वरा महांगदे, इन्होंने बालिका वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पुशअप में। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। बच्चों, आपकी तालियों में कोई भी किसी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आदित्य गरण, इन्होंने बालक वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आदित्य गरण, जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा आदित्य थोम्बे, जिन्होंने बालक वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। मास्टर आदित्य थोम्बे, जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। इसी कड़ी में अगले प्रतिभागी हैं मेहक नरेंद्र पाटिल, जिन्होंने बालिका वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। धन्यवाद श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद। पुशअप चैलेंज के सभी विद्यार्थी एक बार सभी लोग मंच पर आ जाएं। इनके लिए एक ट्रॉफी प्रदान की गई है जो इनके सम्मान का प्रतीक है। धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. You may proceed to take your seat. Just now you saw that ACS number 3 provides ample opportunity to its students to develop their inner abilities and finding innovative opportunities of their own. So I would like to draw your attention to the fact that the participating numbers in these programs are limited due to COVID protocol requirement. So even as time and circumstances change, we celebrate this day with same sentiment and belongingness to the institution and take pride in the institution of ACS number 3. Principal ACS number 2, Mr. Sushant Kumar Sarangi is among us. I request Nava to welcome him with a bouquet of flowers. Thank you, sir, for gracing the occasion. साथियों, हमारे संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए, किंतु आए दिन हमारे सामने ऐसे न जाने कितने उदाहरण हमें मिलते हैं जिनमें हम बच्चों को बाल मजदूरी करते हुए देखते हैं। इन बच्चों को हम लोग होटलों में, घरों में, दुकानों में और न जाने कहां कहां हम लोग बाल मजदूरी करते हुए देख सकते हैं। इसी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा एक नाट्य प्रस्तुति का आयोजन किया जा रहा है। इनका मार्गदर्शन किया है हमारे विद्यालय की हिंदी शिक्षिका प्रतिभा रोकड़े एवं शारीरिक शिक्षिका स्वाति सिंह ने, तथा इसमें अभिनय करने के लिए आ रहे हैं पायल गोपाले, यशस्वी ठाकरे, जवेरिया शेख एवं साई वाटकर। तो आइए इस नाट्य प्रस्तुति का आनंद लेते हैं।
रेनू, अरे ओ रेनू, आई मालिक। जी मालिक। मैंने तुम्हें कपड़े धोने के लिए दिए थे, धोए तुमने? अब धो लेती हूँ मालिक। हाय भगवान, इतने सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? इस लड़की से ही पूछो। ये ऐसी आलसी लड़की, इसके चक्कर में अपना मूड क्यों खराब करते हो? जा मालिक के नाश्ता लगा जा। चलो मैं ऑफिस जाता हूँ, बहुत टाइम हो गया है। नाश्ता करके जाओ। नहीं, बहुत टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ अभी। थोड़ा सा करके जाओ। जल्दी लाओ फिर। रेनू जल्दी मालिक के नाश्ता लगा। रेनू ये लेकर जाओ, मैं जाता हूँ। रेनू, अरे ओ रेनू, घर के सारे काम हो गए क्या? हाय भगवान, तुमसे एक भी काम अच्छे से नहीं होता। अच्छा वो छोड़ो और मेरे लिए एक गिलास शरबत लेके आओ। ये क्या किया? काम भी अच्छे से नहीं कर सकते, काम भी तो अच्छे से नहीं मालकिन। निकल जाए यहाँ से। राधिका, अरे ओ राधिका। मैं दीपा। हाय। हाँ, कैसी है तू? बहुत अच्छी हूँ। बहुत दिनों बाद मिले ना। हाँ। बता तेरी लाइफ कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। तेरी कैसे चल रही है? अच्छी, हाँ। अच्छा आ बैठ। हाँ। अरे रेनू बेटी, नमस्ते, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। फिर तू ना मुंह क्यों इतना उतरा हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, वो अभी सो के उठी ना, इसीलिए। अच्छा रेनू ठीक बेटा, है। आंटी के लिए चाय लेके आना। अच्छा दीपा, हाँ। तुम रुक बैठना, मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है। रेनू बेटी, चाय वाय छोड़ो, इधर आके बैठो। क्या हुआ रेनू बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें किसी ने मारा, तुम्हें किसी ने पीटा, तुम्हारे ऊपर किसी ने अत्याचार किया? बोलो रेनू बेटी, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, सब लोग मुझे हाय भगवान, हाय भगवान, इसका फिर से चालू हो गया नाटक। हाँ। अरे राधिका, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एक माँ होने के नाते तुम इतना अत्याचार कैसे कर सकते हो राधिका? ये मासूम नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल। एकदम चुप राधिका, एक शब्द में मत बोलना, नहीं तो मैं और तुम्हारे पूरे परिवार को अंदर कर दूंगी। चलो रेनू बेटी। तो देखा आपने दोस्तों, इस दुनिया में शैतान है तो भगवान भी जरूर है। राधिका नाम की शैतान और उसके पूरे परिवार में फंसी रेनू नाम की मासूम सी बच्ची। केवल राधिका और उसका पूरा परिवार शोषण करते, उसे मारते थे, उसे पीटते थे, उसके ऊपर अत्याचार करते थे। उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये भगवान से भी नाराज गया। फिर उसने दीपा को भेजा एक फरिश्ते के रूप में मासूम सी बच्ची को शैतान के जाल से निकालने के लिए। दोस्तों, रेनू की तरह बहुत सारे मासूम बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर का शिकार बन रहे हैं। हमें इससे लड़ना होगा, इसके ऊपर विरोध करना होगा। अगर आपके आसपास कोई बच्चा चाइल्ड लेबर के ऊपर शिकार होते दिखे तो अभी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। इधर ही। जय हिंद, जय भारत। Children are the future of India. To bring a strong nation, our children should be well fed, they should be given the right of education, and they should be given good health facilities. And child labor should be prohibited, it is prohibited by law, and we should encourage the children to hold a book and a notebook instead of holding a broom. Now hold your breath. The students of ACS 3 are coming to rock the stage with Michael Jackson dance performance. This dance is guided by Selson Samuel sir. And the participants are Parth Tade, Tanis Kadam, Akash Yadav,
Yogesh Kumar, and Meet Gharat. Michael, eles não ligam pra gente. Wow, what a dazzling performance. And it was mesmerizing. Thank you, children. Now, let us pray for world peace. Let's pray that God should protect us, God should nourish us, and we should work conjointly, and all our activities should be vigorously and effectively done under the blessing of the superpower. Now the children of Standard 10th are coming to present before us a peace dance, and the participants are Aditi Jodge, Manaswi Nevare, Shravani Kannade, Nihira Makeswar, Anushree Sane, Srishti Wag.
भजत अखिल हृदय मैत्री भजत अखिल हृदय मैत्री भजत अखिल हृदय मैत्री भजत अखिल हृदय मैत्री भजत अखिल हृदय आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममात्मन् त्यजत परेष्वक्रममात्मन् मैत्री भजत अखिल हृदय भजत अखिल हृदय जननी पृथ्वी कामरुगास्ते जननी पृथ्वी कामरुगास्ते जननी पृथ्वी कामरुगास्ते जननी पृथ्वी कामरुगास्ते जनको देवर सकल दयालु जनको देवः सकल दयालु जनको देवः सकल दयालु श्रेयो भूयात् श्रेयो भूयात् श्रेयो भूयात् सकल दयालु Beautiful. What a apt message you have given to the today's world, seeing the turmoil that is happening through in the different places of the world. If you want the message given by these children, or if you want to conquer the world, you have to cultivate friendship and humanity. Maitrim bhajata and yuddham tyajata, that is, you have to renounce war. Thank you, children, for beautiful classical performance. Now I would request our chief guest, Sri Vineet Kumar Sharma, to come to the dais and accompanied by our Vice Principal, sir, to come to the dais to present some awards to the children. This year, India is celebrating Azadi Ki Amrit Mahotsav to commemorate the 75th glorious years of independence. On this occasion, AEES conducted an audio-video competition in which our school had bagged the runner-up's prize, and the participants were Swara Mahangade, a singer, Shreya Kirsagar, singer, बच्चों जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, क्योंकि उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर हमारा नाम रोशन किया है। Lakshmi Kashyap, singer,
Susila Rani Jacob, singer. Nabya Raj not here with us. Then Manthan Mange on guitar. Susila Rani Jacob again on guitar. Next, Kamal De on keyboard. Kamal De on keyboard. S. Adityan on tabla. Parth Saide, tabla player. Atulya Tejas, speech. Shrestha Dimole, speech. Nayan, speech. Kriti Tiwari, speech. Esanbi Vasne, dance. Sauri Bankar, dance. TV Legha Sri, dance. Ananya Gaikwad, dance. Neha Sindhe, dance. Ayurda Vadke, dance. Sachi Yaswardhan, dance. Swara Mahangade, dance. Thank you, sir, for motivating our students by presenting the certificates. साथियों, अभी समय हो चला है पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु हमारे विद्यालय में पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन किया गया था, जिसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विशिष्ट अतिथि श्री सुशांत कुमार सारंगी सर, प्रधानाचार्य परमाणुजा केंद्रीय विद्यालय 2। कृपया वे मंच पर आएं और हमारे इन विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर गर्वित कराएं। सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूंगा मंदार बोरले, जिन्होंने निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था एवं प्रथम स्थान अर्जित किया था। मंदार बोरले। इसी कड़ी में अर्नव जाम्भुलकर,
जिन्होंने निबंध लेखन प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है अर्नब जाम्भुलकर। निबंध लेखन प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया है मोहम्मद अमान अनवर। कृपया मंच पर आएं। मोहम्मद अमान अनवर उपस्थित नहीं है। समर्थ सुरोसे इन्होंने भी निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है कक्षा 7वीं में। कक्षा 7वीं से निबंध लेखन प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है यशित पुरुषोत्तम वासनिक। इसी कड़ी में आगे हैं अरहंत सोनो ने। इन्होंने निबंध लेखन प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया है अरहंत सोनो ने। कक्षा 8वीं के लिए आयोजित निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है अनन्या गायकवाड़। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है साई वाटकर, जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इसी के अंतर्गत आशु भाषण प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त किया है मिस तृप्ति डोंगर दिवे। प्रथम स्थान अर्जित किया है इन्होंने। इनके साथ ही प्रथम स्थान को अर्जित किया है अतुल्य अनिल कुमार। इन्होंने भी प्रथम स्थान अर्जित किया है। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है आदित्य गरण, मास्टर आदित्य गरण। इनके साथ ही आशु भाषण प्रतियोगिता के अंतर्गत कक्षा 8वीं के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया है एस आदित्यन। इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी कड़ी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है अवनीश रानाडे। बच्चे जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। इनके जोश और जुनून को बरकरार रखें। इसी कड़ी में आगे तृतीय स्थान प्राप्त किया है अनन्या चौधरी। इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इसी सप्ताह वीक में हम लोगों ने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें कक्षा 11वीं की वरुण वास ने, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वरुण वास ने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान। जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। इन्हीं के साथ ही प्रथम स्थान प्राप्त किया है आदित्य सिरके कक्षा 11वीं से। इन्होंने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है प्रश्नोत्तरी में। इन्हीं के साथ ही श्रेष्ठ ढिमोले, इन्होंने भी इन्हीं के साथ प्रथम स्थान को अर्जित किया है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और इनके साथ प्रथम स्थान को प्राप्त करने में सफल हुए हैं अथर्व मांडके। साथियों, इसी क्रम में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली समूह में थे प्रीति मराठे। इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इनके साथ में इनकी टीम से हैं अस्मी पाटिल। इनके समूह में अस्मी पाटिल ने भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। साथ ही इनके साथ द्वितीय स्थान को प्राप्त करने में सफल हुए हैं अतुल्य तेजस, कक्षा 9वीं से अतुल्य तेजस। कक्षा 9वीं से ही द्वितीय स्थान को प्राप्त करने में सफल हुए हैं श्रेयांश प्रसाद, कक्षा 9वीं से श्रेयांश प्रसाद। इन्होंने भी द्वितीय स्थान को अर्जित किया है। इसके साथ ही प्राथमिक कक्षाओं के लिए आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है वंश किया दकिनेडी।
वंश की यादक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। वंशिका साथ ही भी इनके साथ प्रथम स्थान को अर्जित किया है प्रमर्थ सिनकर, इन्होंने भी प्रथम स्थान को प्राप्त किया है। कक्षा चौथी से द्वितीय स्थान को प्राप्त किया है मयंक जयसवाल। जोरदार तालियों से स्वागत करें मयंक जयसवाल का। ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे, इन्होंने इस प्रतियोगिता को प्राप्त करने में बहुत ही मेहनत की है। साथ ही मयंक के साथ सार्थक सिंधे, इन्होंने भी द्वितीय स्थान को प्राप्त किया है। सार्थक सिंधे कक्षा चौथी से द्वितीय स्थान को प्राप्त करने में इनके सहयोगी हैं लहर परमार, इन्होंने भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही कक्षा 5वीं से प्रथम पुरस्कार विजेता हैं धनिष्ठा प्रसाद। जोरदार तालियों से स्वागत करें धनिष्ठा प्रसाद का। साथ ही कक्षा 5वीं से प्रथम स्थान को प्राप्त किया है शौख्या मेटकरी, इन्होंने भी प्रथम स्थान को अर्जित किया है। द्वितीय स्थान पर रहे हैं हिमेश नागेश मोरे, इन्होंने द्वितीय स्थान को अर्जित किया है। साथ ही इनके साथ द्वितीय स्थान को अर्जित किया है तुषारिका सिंह। बच्चे जोरदार तालियों से स्वागत करें। बस कुछ ही पुरस्कार और हैं। इसके साथ ही द्वितीय स्थान को प्राप्त किया है ग्लोरिया राउत ने भी द्वितीय स्थान को प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Okay. Yes, Library Week was celebrated to encourage the children to take interest in books. Now, in this age of internet, children are going away from reading books. So, to encourage it, various competitions were taking place, and the children participated in this enthusiastically. So, there is more fun and more entertainment and more surprises yet to come. Class 9 children are coming before you with a scintillating dance performance, a fusion dance, a blend of meticulous, flowing and precisely weightless acrobatic movements. This dance was guided by Bharti Lokhunde madam and Salu Chaudhary madam. The participants are Ayurda Vadke, Tanishka Mumbaikar, Kriti Tiwari, Susila Rani Jacob, Savri Vadkar, Gargi Nair, Sanskriti Kolapkar. Yes, children, please welcome them with a round of applause. रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और इस सभा के चेहरों की मुस्कुराहट और तालियों की गूंज बता रही है कि आपका यह प्रयास बहुत ही सार्थक एवं सफल रहा है। साथियों, अब समय हो चला है उस अंतिम घड़ी का जिसके लिए हम सबको बेसब्री से इंतजार है। संगीत मानव जीवन की अनुभूत अभिव्यक्ति और हृदय का उद्गार है। संगीत जीवन का साफ और स्वच्छ दर्पण है जिसमें समाज के व्यक्ति जीवन का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। संगीत मनुष्य के स्वाभाविक स्पंदनों से जुड़ा हुआ होता है। कहा भी गया है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशुपुक्ष विषाणहीनः। साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य उस पशु के समान शोभा नहीं देता जो पशु के सींग और पूंछ नहीं होते। तो आइए आनंद लेते हैं आज के इस ऑर्केस्ट्रा का, इस संगीत का, जिसको तैयार किया है हमारे जाने माने सबके चहेते अंग्रेजी अध्यापक श्री सेल्सल सैमुअल ने, और इसमें सहयोग देने के लिए आ रहे हैं instrumental ensemble. Patil Iqbal is an electric guitar, Tamal De on keyboard, Par Tade is on percussion jazz drum, and percussion jazz drum, and percussion Congo acoustic is played by Adityan Sesan, and on guitar we have Susila Rani Jacob, Manthan Mangde, and Pranit. Through this instrumental music, we are going to pay tribute to our music legends whom we recently lost, Mr. Balasubramaniam, Lata Mangeshkar, and Bappi Lahari. And they are going to play to the tune of music composed by R.D. Burman. These are the future musicians. Yes, in spite of the limitations imposed by COVID, we are able to train children in different activities that includes not only curricular, it includes both other extracurricular and co-curricular activities. The children are also very active and enthusiastic in grabbing the opportunities that are provided by school. महोदय, आपको अवगत कराना चाहूंगा कि इन विद्यार्थियों ने संगीत के साथ साथ शैक्षणिक उपलब्धियों में भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की है। ये वही विद्यार्थी हैं जो शैक्षणिक कार्यों में भी प्रथम आते हैं और संगीत में भी इन्होंने अपना प्रथम स्थान हासिल किया है। इन्होंने इस संगीत को सीखने के लिए किसी भी प्रकार की शैक्षणिक कार्य को नहीं छोड़ा है, हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है, और मुझे आशा है कि ये विद्यार्थी आगे भविष्य में भी हमारे विद्यालय का नाम चारों दिशाओं में रोशन करेंगे। Yes. So, as our children are getting ready to present their performance, but I'd like to tell you that in this celebration, in this annual day celebration, we recognize the talents of the children, we admire their achievements, and we celebrate the success that our institute has achieved. During the last years, the COVID pandemic made us face significant challenges, but during this crisis, our teachers have shown great leadership and innovation in ensuring that learning never stops and no learner is left behind.
So children, please be patient. They are going to present you a beautiful foot tapping performance, composition of instruments, and they're guided by our Selson sir. साथियों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही अवगत कराया था कि हर जादूगर अपने उस अंतिम आश्चर्यजनक खेल को सबसे बाद में दिखाता है। तो आज का यह हमारा अंतिम, इस कार्यक्रम का अंतिम वह जादू है जो हमने छिपा करके रखा था। इसको आपके समक्ष प्रस्तुत करने में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस प्रस्तुति को देख करके आप अपने आप को तालियों की गड़गड़ाहट से रोक नहीं पाएंगे। तो आइए आनंद लेते हैं इस ऑर्केस्ट्रा के संगीत की प्रस्तुति का।
Magnificent, mind-blowing, bouncy and enthralling. What coordination, what synchronization of electric guitar, keyboard, percussion jazz drum, percussion congo and acoustic rhythmic guitar. Beautiful children, an enthralling performance, and keep it up, dear children. Now it's time for the message of the day. I'd like to request our Honorable Chief Guest, Mr. Vineet Kumar Sharma, Site Director, Tarapur Maharashtra Site, to say a few words and motivate the children and present his thoughts about the celebration. बच्चों, आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करें आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान विनीत कुमार शर्मा जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का एक सच्चा श्रोता बनकर के अवगाहन किया है। श्रीमान विनीत कुमार शर्मा जी। Hello. Thank you, ma'am. Principal AECS 3, Mr. Seshan, Coordinating Principal and Principal AECS 2, Mr. Sarangi, Principal AECS 1, Mr. Kashinath Behra, Headmaster Sir, Mr. M.J. Iqbal, other teachers, and above all, the main artists and the guests of today, students who are present over here and who are joining in this virtual this hybrid mode event. A very good morning to you all. Students, I have been in department for 34 years, and in these 34 years, the only vibrant thing which I have seen is the other schools. Our schools, wherever they are, here also, they have never stood still. They keep on following the main mission of the schools to develop the students as a whole. And this perfectly they are on this job. I'm thankful to Mr. Seshan because today when the annual report was presented, under his leadership, the students who have succeeded so well, not only in academic activities, but all-round development is taking place in the school. That was very evident from the annual report. And after that, in the co-curricular activities, the way students have participated here, it is showing that we are in a very perfect manner, we are preparing our young minds for tomorrow's complex world. And as the last 2 years of pandemic has shown us that it's a very fast changing world now, because the other day I was traveling from Mumbai to Delhi side, and in the train there were co-passengers. I observed that now the things have come that office never ends.
All were attending their office from the train also. So that is the case with the students also, because now we have to prepare our students for, because the era of reading the textbook, mugging up the textbook, reciting the same thing along with teachers, and then just dumping out in the exams, that has gone now, because the world has changed very fast, and so in a similar manner we also have to adapt to it, because nowadays the competitive exam, the pressure of competitive exam, and all these things indicate that it's not reading the textbook. We have to develop the mind in such a manner that we should not tell the students what to think. We have to teach them how to think, because that is the reality of tomorrow. Because in 2020, before the COVID itself, it was told that whatever jobs we are seeing today, by 2030, these jobs will not be there. They will altogether change its, unka pura swaroop hi badal jayega. So, and we are seeing it, it's becoming true. Because never anybody has thought that IT industries, which was so flourishing, and all of a sudden this work from home concept will start. And to the great extent, the companies also are enjoying it. So everything is changing. The kind of jobs are changing, the work environment is changing, and so in the similar manner, we have to develop the students also. And in this role, along with the students, hello, I was in a function, I'll call you back. Along with the role of teachers, principals, the role of parent also is very important, because school is a place where the student is not only studying, he is growing also. He is growing as an adult, and we have to prepare him that way only. Similarly, from house also, instead of forcing them to pursue this, pursue that, we always keep on asking what you will do when you will leave school, what you will like to become. Instead of that, we should focus on his interest, like what new you have done today, which way you want to work. Because you cannot imagine any society which is full of engineers or full of doctors. It cannot work. It has to be a mix of everything. So wherever the student's interest is there, like today we have seen, creativity will be the buzzing word for tomorrow in every field. So wherever his interest is there, a lot of fields are opening up. So instead of pushing him to, because often I see, if a student after passing out from 12th, he has not cracked JEE, I'm happy to note that here today our students of this school have got very good marks, and they are placed in good institutes also. But I have seen homes where if the JEE is not cracked, as if the heaven has fallen down, that will be work. Ghar mein matam ka mahol ho jata hai. That shouldn't be the case. We have to see all around, everything is changing, and how to make them more creative for tomorrow's world. That should be our aim. Because we should not fill their minds. We have to develop their minds, because just a fill mind with the things which he has mugged up, they won't work for tomorrow. So we have to start a new way of developing our students. And after seeing the programs and the list of programs which was there in today's presentation, I am seeing our school are doing their best to help students in extra and co-curricular activities, which are very helpful in the days to come. And I am thankful that I was given an opportunity to be amongst you, such bubbling minds and such a jovial atmosphere. So I'll not take much of your time, and I'll just congratulate first the students, for the teachers and principal of our school, especially ACS 3, which through their annual report card, it was depicted that how hard they have worked for the students, and the results are in front of us. Secondly, I'll congratulate all the students who have received the prizes. See, in prizes also, I was seeing
such an innovative idea of our teaching staff, including the principal, Mr. Session, that they have made a competition, seeing that students are going away from the books. They have kept a competition, library competition. It's a very innovative idea, so that students will, apart from their textbook, they will be reading something else also, and they will start to think in other directions also. So that's a very good concept, because see, it is today, whatever answers we want, Google Pay, just a few clicks of mouse will give you that answer. What answers you will not get is what we are going to face once we leave out of school, then further out of college, and we face the world. There, these answers from Google will not get. From the situation, right from the beginning, we have to condition the mind such that in a given situation, he should be able to analyze that and come out of good solutions there and then itself. So that's why right from the beginning we have to train. In school we get all those trainings, because in the form of, you have proctors, what do you call it? Schoolboy, class masters. No? Monitors and school captains. In the form of monitors and school captains, right in the beginning itself, see, once somebody becomes a monitor, he gets the authority. So he gets the feeling of that authority and how to control the person. This is a very good training actually. So how to behave with that authority. Similarly, when he goes out, various positions he occupies later on, how to respect that authority, how to get the things done with that authority. Similarly, the other students who are with them, how to behave under somebody who is a class monitor today, but tomorrow we'll be working under somebody. So which way to behave, these are the training which right in the initial stage itself we are getting. So we are fortunate that through the department we have got such a nice setup where people struggle, outside people also want to struggle, they struggle to come and get admission over here. And in the excellent manner in which our teachers, principals and other staff, they are working for the student, I'm really thankful to them that they are really building up our country's future for tomorrow. Thank you very much once again. बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, आपने अपना बहुमूल्य समय देकर जितनी बारीकी से इस कार्यक्रम का अवगाहन किया है, उसे देखकर लगता है कि आप इस कार्यक्रम के एक सच्चे दर्शक हैं। मान्यवर, आपके वचनों से हम स्वयं को गर्वित महसूस कर रहे हैं। आपके द्वारा दिए गए सुझावों एवं नीतियों को हमारे विद्यालय के विद्यार्थी अवश्य ही अपने जीवन में अपनाएंगे और आपके कुशल मार्गदर्शन में हमारा विद्यालय नित नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। विद्यालय का एक लघु अंश होने के कारण मेरी चेतना विवश होकर के आपके सराहनीय व्यक्तित्व की प्रशंसा में अपने के हृदय के उद्गार चंद पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करना चाहती है। ये चिराग बेनजर है, सितारा बेजुबां है, अभी आपसे मिलता जुलता कोई दूसरा कहाँ है, कोई दूसरा कहाँ है। धन्यवाद श्रीमान। इसी के साथ अगली कड़ी में मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री अखिलेश गुजराती सर से निवेदन करूंगा कि वे कृपया मंच पर आकर के धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री अखिलेश गुजराती जी। धन्यवाद श्रीमान। सभी को सुप्रभात। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापन के लिए उपस्थित हुआ हूँ और इस कड़ी में सर्वप्रथम मैं साइट डायरेक्टर टीएमएस एंड चेयरमैन एलएमसी
मिस्टर वी.के. शर्मा सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे बच्चों के लिए समय निकाला और उन्हें आशीर्वाद स्वरूप कई बातें बताई। सर, मैं यहाँ पर आपसे वादा करना चाहता हूँ कि आपके द्वारा बताई गई बातें हमारे छात्र ध्यान से सुनिए हैं और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। मैं अगली कड़ी में धन्यवाद देना चाहूँगा प्रिंसिपल एंड डीडीए मिस्टर S.K. सारंगी सर। मुझे पता है वह काफ़ी व्यस्त थे और मेरे व्यक्तिगत अनुरोध पे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हमें बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारे बच्चों को आशीर्वचन देने के लिए। पुनः मैं प्रिंसिपल ACS 1 मिस्टर काशीनाथ बेहरा सर का धन्यवाद देना चाहूँगा। सुबह से प्रोग्राम प्रारंभ होने से अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बच्चों को आशीर्वाद दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे वाइस प्रिंसिपल इंचार्ज सर मिस्टर S. सेशन। उनके बिना इस कार्यक्रम की रूपरेखा और उसका वर्णन संभव ही नहीं था। उन्होंने समय समय पर हमें सभी को मार्गदर्शित किया और इस सुंदर कार्यक्रम की रचना की। मैं साथ ही धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम को संपूर्ण रूप से संपन्न करने के लिए विभिन्न समितियों की, जैसे रिसेप्शन कमेटी, रंगोली कमेटी, इनविटेशन, अनाउंसमेंट, स्टेज डेकोरेशन, PA सिस्टम, साउंड सिस्टम, सीटिंग अरेंजमेंट, स्टेज मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयरिंग, फोटोग्राफी, रिफ्रेशमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ दिस प्रोग्राम। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज इस समय हमें 700 परिवार 700 फैमिलीज आर ऑब्जर्विंग। मैं लाइव स्ट्रीमिंग कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही हमारे स्टाफ, ऑफिस में काम करने वाले सभी लोगों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। यदि हमारे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चे न हो और उनके पेरेंट्स का हमें अगर सहयोग न मिले तो यह कार्यक्रम हमारे लिए जीरो साबित होगा। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स को और बच्चों को पूरे हृदय से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही सभी जो व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम में सहयोग किए हैं, उन सभी का हृदय से धन्यवाद है। सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। शुभ दिवस। Thank you, Gujarati sir, for taking the name of each and every individual who made this program a success. Now, before we end this program, I would request all of you to please come to our attention position for the national anthem. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस सभा में पधारे हुए सभी सदस्यों का मेरा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम के साक्षी सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम के सहयोग देने वाले
सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी कामना के साथ हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्यार्थी अपनी जगह बैठ जाएं। सभी विद्यार्थी अपनी जगह बैठ जाएं।